We have old age homes, we have orphanages, we have food centers, we have street schools, we have Saksham Kanya Yojana, which has been a dream since 2 years, where we have more than 200 girls whose lifetime education we support, which is one of the biggest education support programs by any individual non-profit organization. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आज आपका स्वागत करता हूं इनर वेलनेस ट्राइब पॉडकास्ट में। आज बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, फिलैंथ्रोपी, मेंटरशिप के द्वारा लोगों के जीवन में इम्पैक्ट लाया है। पीसी स्नेहल ग्रुप के एमडी हैं ये, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है पूरे भारत में। ये हमेशा ट्रैवल करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आज इन्होंने हमें समय दिया है। इनके अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हैं। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था कि बिजनेस वर्ल्ड ने इन्हें 40 अंडर 40 में सम्मानित किया। 2018 के टाइम्स मैन ऑफ द ईयर ये रहे और बहुत सारा इम्पैक्ट कई सोशल कॉजेज़ के लिए ये काम करते हैं। आज हमारे दर्शक बेहद खुशकिस्मत है कि आज इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। तो बिना वक्त ज़ाया किए अब डायरेक्टली उन्हीं से सीखेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर चिरंजीव पटेल, जिन्हें प्यार से लोग सीपी कहते हैं। सो सीपी, थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी आपकी रही है, अमेजिंग इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है। सो वी वुड लव टू नो इन शॉर्ट कि आपने कैसे शुरू किया, हाउ इट हैपेंड, इफ़ यू कैन शेयर विथ आवर ऑडियंस। YSR जी, मेरा पूरा जर्नी जो हुआ है हैज़ स्टार्टेड प्रॉबेबली फ्रॉम द एज ऑफ 2। अगर मैं किसी को बोलूँ तो यू नो हाउ डज अ 2-year-old child realize, but I was thrown into a swimming pool at the age of 2 years, and when my father actually threw me into the pool and told the coach to make me learn swimming, even the coach was amazed कि यार कैसे कोई could throw a 2-year or 2.5-year-old kid into a pool, और वो कैसे करेगा। तो उन्होंने बोला सीख जाएगा, हर कोई आता है दुनिया में ऐसे सीख जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि आज तक जो भी अपॉर्चुनिटी आई, जो भी दरवाज़ा भगवान ने खोला, जो भी प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ से कूद गए। बाकी तैरना सीख लिया और बाकी तो कारवा बनता गया। लवली। तो जिंदगी ऐसे ही जिए। एंड एवरी स्टेप हैज़ बीन लाइक दिस राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज व्हेन आई वाज इन माई 7th standard। फॉर अ स्मॉल जैकेट दैट आई वांटेड टू बाय, माई फादर टोल्ड मी दैट आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ दिस। वो बहुत एक्सपेंसिव था वो टाइम पे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, 1500 रुपये वो टाइम पे व्हेन आई वाज इन माय 7th। बहुत बड़ी चीज़ है, वो डिमांड करना भी शायद गलत था मेरे हिसाब से। बट देन हिज वर्ड्स एंड हिज एंगर दैट टाइम प्रॉबेबली वाज द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज ही टोल्ड मी अगर जब खुद के पैसे कमा लो तब तक कर देना। और तब मैंने डिसाइड किया दूसरे दिन से कि जो स्टोर से वो जैकेट पसंद आया, वहीं मैं दूसरे दिन स्कूल से आके वही स्टोर में जाके मैंने जॉब की डिमांड की। ओके। एंड so the shop owner laughed कि यार कैसे कोई 7th standard के लड़के को जॉब देगा, it's not even official and I shouldn't be doing it. I said, uncle, I will work as your family, I will work as someone from your family and I will just do whatever sales I can and I'll do my। तो आप पढ़ोगे कैसे? मैंने बोला uncle 7 to 12 is my school, then I'll come, I'll work for 5-6 hours whatever you tell me, जितना आप बोलेंगे उतना काम करूँगा और फिर बाद में जाके घर जाके होमवर्क करके सो जाऊँगा। वो नहीं मान रहे थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला आपकी मम्मी को मुझे पूछना पड़ेगा। मैंने बोला आप पूछ लीजिए। माई मॉम डिड नॉट इवन नो कि मैं तो गया हूँ जॉब मांगने। तो लैंडलाइन पे वो टाइम पे वो फ़ोन किया, वो तो बढ़ गई, उसको भेजो आप घर पे वापस। आई टोल्ड हर मॉम लेट मी डू इट। आई टुक दैट एंटायर डे टू कन्विंस माई मॉम। आई सेड डोंट टेल एनीवन, लेट मी डू दिस। बाय द टाइम इवनिंग डैड कम्स फर्स्ट 2-3 days, then I'll tell him my experience, but I'll tell him why I'm doing this. So that journey started. I became a proper salesman. I learned in entire 1 week of things. Slowly I was given the entire floor for kids area and teenage garments. I was selling garments 12 to 5. टाइम मिले दोपहर में, हाँ इन 7th class टाइम मिले तो दोपहर में होमवर्क कर लेता था वहाँ जाके। जो कलीग्स थे, जो वहाँ काम करते थे, उनके साथ खाना खा लेता था, नाश्ता कर लेता था। बट जो लर्निंग्स मिला वो इससे कि आपको एक क्लाइंट को 5 मिनट में या 10 मिनट में कैसे समझाना है, कैसे दिखाना है, कैसे ट्राई करना है कि वो क्लाइंट आया है, वो कुछ लिए बिना हमारी शॉप से जाए नहीं। एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ ओनरशिप।
तो वो जो मार्केटिंग लेसन्स थे, वो जो कम्युनिकेशन का पावर था, शायद वहाँ से जर्नी चालू हो गई. And then in my schooling days and college days, I have always done jobs wherever the opportunities came. I have been a waiter also, and I worked at the first Pizza Hut that was opened in Ahmedabad. And I was in my 12th. Now, people study in 12th, but I wanted to do this. So your father was also into business, or he was what? absolutely into business, but So he was very that clear was his way of this is teaching my you. business. You know, you're not a part of it. You're not entitled to come in what I have developed. Go and develop your own world. That's beautiful. Yeah, and it's still date. It's been the journey. Those days I thought he was my biggest enemy. Yes. Who today has become the biggest mentor and the only guru or the idol I have in my life. Oh, that's very Because inspiring. these are the lessons that I learned. Yes. And then while I was in my college, like ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार बोल दी है, बहुत जगह पे प्रिंट हो गई है, बहुत आर्टिकल्स आ चुके हैं इस पे. Right. But so how exactly entrepreneurship? yeah, how so it started? I was studying computer science in Bangalore. That's when something happened. हमारे जो पड़ोसी थे, स्टूडेंट अकोमोडेशन था, उनके बाजू में एक घर था, वहाँ साइंटिस्ट रह रहे थे, वो रहते थे. तो उसमें 9/11 का अटैक आया. स्टूडेंट अकोमोडेशन में टीवी नहीं था, तो हमने अंकल आंटी को रिक्वेस्ट किया कि कैन वी कम एंड सी द टीवी एट योर प्लेस बिकॉज वी वांटेड टू सी समथिंग बिग दैट इज हैपनिंग. दे वर वेरी वेलकमिंग. दे कॉल्ड अस. But while the other friends were watching TV and news and something that was the biggest event happening in the world, again, I took that opportunity and I asked uncle, आप रोज आपके गैरेज में जाके क्या करते हैं? He said, I'm a scientist and I developed this liquids. I kept on going every day with him. Follow-ups होते रहे. I saw what he's creating. Then I understood. I said, uncle, ये chemical का है. मैं तो कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, but I know people in Ahmedabad जो इसको शायद समझ पाएंगे. मुझे मार्केट नहीं करना है. अंकल मैं ट्राई तो करूँ, आप मत करो. पर दुनिया में बनाई हुई चीज़ अगर रूम के अंदर रह जाए तो वो तो मतलब ही नहीं है ना. जो आपकी लाइफ का गोल है, आपके पास आज इतना नॉलेज है, तो विदाउट वरिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, टुडे यू आर चेंजिंग सो मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रू द एंटायर YSR मूवमेंट दैट हैज स्टार्टेड टू हील पीपल. तो सेम वे आई टोल्ड हिम कि सर आपका मूवमेंट अगर अंदर रह गया तो लोगों तक नहीं पहुंचेगा. लोगों को पहुंचाना हमारी जवाबदारी है कि एक हर्बल लिक्विड काफ़ी केमिकलों को रिप्लेस कर सकता है. तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, on my dad's construction company letterpad, I started shooting out letters for chemical business to various factories here. And in my vacation, I used to come here. And I called that scientist here. Both of us used to go in buses, trains, everywhere across the city, state, and try and market this liquid. No one was ready to do it. But that same year in 2000, in the year 2000, in the millennium, the word green started. So a lot of people wanted to convert to Ayurvedic, herbal, green. And so Taj Hotels, which was that time in Ahmedabad, they gave us the first break that we are turning green and we want to use this liquid in our cooling towers and boilers and we want to replace the chemicals that we are using. Amazing. So while actually we were on the last day, सब हताश होके जा रहे थे कि कहीं से ब्रेक नहीं मिल रहा है, तब वो लंच पे वो कॉल आया and that changed the game and the first entrepreneurial journey in my college days started. College days started. That journey went on. मंजिल दूर हो तो घर से जल्दी निकलना चाहिए. तो मतलब आप जल्दी ही निकल गए काफी. अपनी तो दूर है ही आज की तारीख में भी, तो तब से निकले हुए हैं. And that was when I was 18 years. 5 years I really struggled. I went to every single city, state, district, wherever I could. Appointed distributors, appointed channel partners, created a network. जब ये टाइम पे networking का concept नहीं था, ये जो multi-level networking का होता है, then that time at the age of 21 I created this entire multi-level networking model. और मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत जगह सेल किया है, बहुत जगह सेल्समैन के जैसे कोल्ड कॉलिंग किया है ये लिक्विड बेचने के लिए, बहुत फैक्ट्रीज में गया हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई लर्नड कि फैक्ट्री के बाहर से अगर फ़ोन करके 20 सेकंड में आपको किसी को कन्विंस करना है कि वो फैक्ट्री में आपको अंदर जाने दे, तो वो जो फ़ोन कॉल होता है कन्विंस करने का, किसी इंजीनियर को आप फ़ोन करो, किसी परचेज वाले को करो या किसी को भी करो, तो दैट्स व्हेन आई लर्नड माई बिगेस्ट लेसन. और आज वो सबके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ कि द पावर ऑफ योर कम्युनिकेशन शुड बी सो हाई, योर कन्विक्शन एंड योर बिलीफ इन वॉट एवर यू आर डूइंग हैज़ टू बी सो हाई कि 5 सेकंड में सामने वाला कन्विंस हो जाना चाहिए कि आप उसको माल बेचने नहीं आए, उसका भी कुछ भला है. और ये 2 वे विन विन सिचुएशन है. जब आप वो लेवल का कम्युनिकेशन, वो लेवल का सेल्स टेक्निक, वो लेवल का मार्केटिंग टेक्निक सीख जाते हो, तो देन सक्सेस इज वेरी शॉर्ट. यू हैव ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द बैटल. True. I think generally even in sales we many times talk about selling is just transfer of conviction. Right? Exactly. कि एक मतलब conviction is so powerful कि कई बार एक just पत्थर है जो रोड पे आया है
और हमने उसे ठोकर मार के साइड में कर दिया, लेकिन उसी पत्थर को अगर उठा के थोड़ा आगे जा करके उसके ऊपर अगर एक थोड़ा सा तिलक लगा दें और माला लगा दें और एक पेड़ के नीचे रख दें, वो लोग तो पूछने वाला हो जाता, अब पूछने वाला हो जाएगा। मतलब ह्यूमन कन्विक्शन में इतनी बड़ी पावर है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस में भी इसका काफी फेथ था। और वो फेथ से चला था। एंड एट द एज ऑफ 23 आई हैड 17 or 18 डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडर मी, एंड वी स्टार्टेड सेलिंग मोर देन 10,000 liters 1 ton every month. And I did my first sales conference in Abu that time. And imagine a 23-year-old boy with everyone across of all age groups, and people who are around 50 and 60 years in front of 23-year-old boy, and that boy is presenting you the vision and the idea of where he wants to take the brand, how he will take it, and how the entire business shapes up. Lovely. That's how they So enter. what I'm able to make out of this journey is, what is the role of proactivity, would you say, in this journey? Because many times young people, they have ideas in their mind and they have so much resistance कि वो perfection का wait करते हैं, उस पर action नहीं लेते हैं. So what you have to say on this? बहुत ही बढ़िया आपने पूछा। तो एक्चुअली ये पूरी जर्नी का सार, आज तक की भी जर्नी का, नॉट जस्ट टिल 20 years, बट ये बाकी के सालों का भी सार वही है। मैं बच्चों को और यूथ को यही बोलना चाहूँगा, इज दैट के आइडियाज़ बहुत लोगों के पास आते हैं, एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड टुडे is not becoming successful, or there are so many scientists also, if you see, who have invented great products, but those products have not become successful in today's world because they were not able to implement that idea in the right way. काफ़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, काफ़ी यंग लोग हैं जिनको अमेजिंग आइडियाज आते हैं, पर वो कन्विक्शन से, जैसे आपने बोला, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। वो डर हटा दो अपने में से, वो फेलियर का डर हटा दीजिए, एंड देन कीप ट्राइंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जहाँ थे वहाँ हुई, आप तो पढ़ ही रहे हो, आपका काम कर रहे हो, आपकी जॉब चालू है, पर डोंट स्टॉप ट्राइंग। वो डर से कि यार मैं फेल हो गया तो क्या, वो अगर वो डर निकल गया आपके अंदर से और आपने आपके आइडिया में कन्विक्शन, फेथ और बिलीफ ला दिया, तो आई डोंट थिंक एनी पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू ड्रीम ऑफ। ब्यूटिफुली सेड सीपी। और कई बार अगर हम देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर कई बार हमारी पेरेंटिंग में भी ज़्यादातर केसेस में कि फेलियर को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, जैसे कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। सो कई बार मैं सोचता हूँ कि आई थिंक सफलता से ज़्यादा ज़रूरी तो कई बार फेलियर हो जाती है आपके लिए, बिकॉज वो एक फीडबैक है कि फेलियर इज़ जस्ट अ फीडबैक दैट वी आर गेटिंग। बट वाई पीपल हैव डेवलप्ड सो मच fear around failure, they don't even try because of the fear of failure. So how failure shape our success, how it shapes our personality? Let me share a very nice parenting and an entrepreneurial tip here. I think this could be probably one of the most important things that we will conversate today in this entire episode, is that learn to celebrate your failures. And not just as a business leaders, but also as a parent. How I practice this with my own son and my people and of my team is that today my son is 11 years old, and you know how will I talk to him every time I meet him? तूने क्या ट्राई किया, क्या फेल हो गया? So you know today he has developed that culture and he will celebrate with me, पापा मैंने ये ट्राई किया पर ये मुझे आया नहीं, and then we celebrate that. Wow. So he is learning to understandably accept the failures that are coming in a very nice way, but he's also going to try every week a new thing where he has to come and share with me, Dad, I tried this, but it didn't work out. Other people were great at it, but I'm still learning. I'll see what I do. So we are celebrating failures. We are celebrating learning new things. We are also understanding that it's okay to not succeed. But the trying is very important, because there will be one day when the trial is going to be 100% successful. And that's when he will learn, कि यार ये तो मेरा USP था, पर वो USP तक पहुंचने की जर्नी जो थी, वो उसको शायद 11 साल में मालूम नहीं पड़ेगा, जब वो 21 साल होगा तब उसको मालूम पड़ेगा. That's how I got the idea of my life. Same things as business leaders, as employees or as professionals, if you do it with your colleagues or if with your team members, where each of you come around and on the lunch table every day or once you know in a week, on every Monday you share, क्या last week साला ये try किया था, पर you know इस पे fail हो गया, पर इसमें वो ट्रायल का बहुत, ये प्रोसेस जो था उसमें बहुत मजा आया, कुछ नया तो ट्राई किया. यस, आज आप बॉस हो, पर आपके एम्प्लॉय जो हो रहा हो, रोज हर वीक एक नया आइडिया चाहिए मुझे. सिर्फ फेलियर सक्सेस भूल जाओ, आइडिया लेके आओ. ट्रू, वो जो आइडिएशन है ना, उसकी वैल्यू इज प्राइसलेस. ट्रू.
So one more thing that I'm able to grasp here is a role of parenting and role of education. Both is very important here. Right now आपकी जर्नी से जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी एक राइट मैसेज अपने बच्चे को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी वो मैसेज मिला. सो पेरेंट्स को क्या लगता है कि माइंड शिफ्ट लाने की ज़रूरत है अपने बच्चों के प्रति? व्हाट डू यू थिंक कि वो तो बहुत सर जग जाहिर चीज़ है कि आज की दुनिया में अगर हम लोग माइंड शिफ्ट नहीं लाएंगे सिंस द वे जब हम बच्चे थे तब दुनिया बहुत अलग थी. हाउ टुडे द किड्स आर बीइंग you know brought up and how they need to be tackled, how need to be handled is a very different thing. हम जब थे तब हमको आके पापा ने एक चाटा मार दिया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो अलग चीज़ थी. और आज जब मैं मेरे बेटे का रिजल्ट देखता हूँ then we both actually laugh. Today my son, in his entire result that came last year, he was great at maths, he was great at English. I saw everything. Oh, you excelled, A plus, A plus, A plus. The minute there's this dancing, art and culture came, he was giving this B's and C's. Okay. And the way we both have laughed. And I told him that, Brian, what happened is when I was also doing craft, I didn't know, I still even don't know how to cut a scissor and draw a line properly. And that's when I keep practicing. But I still like scribbling. I do this. Do you do that in your school? Do you scribble? Yes. So, we both were laughing at my failures and what I didn't know. So he understood. Oh, Dad, you also don't know? Yes, I said, I don't know. But then can we do one thing? That every day or every Sunday, like, can we draw something and gift it to each other? And that's what we started doing it. Can we read about something and talk to each other and do this? So he will also come. He also has his Instagram page and he will start posting stories about something that he is learning whenever he does this. So he understands, So the parenting ways have really changed. You nurture them, not teach them. Yes. वो लोग समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते. पर उनको अगर nurture करो as a plant, then they want to grow with you, then they want to talk with you, then they want to breathe with you like a plant will do. It's a very different thing. सो आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइट यहाँ पे सीपी ने शेयर किया हमारे साथ कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट इम्पोजिशन और ओनरशिप, इट इज़ बेसिकली अबाउट नर्चरिंग. कि एक सीड को आप सनलाइट दें, पानी दें, फर्टिलाइज़र दें, एक एनवायरनमेंट दें उसको ग्रो करने के लिए, जबकि उसकी जर्नी वो खुद तय करेगा. उसको पुश आपको नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम. ब्यूटिफुल. सो एंड इन एजुकेशन सिस्टम व्हाट डू यू थिंक some changes needs to happen, because there too much importance is giving on marks and failures. And recently I was studying somewhere that every day or around 10 students are committing, 10 kids are committing suicide. So what do you think, where we are wrong that students committing suicide just because कि 10वीं में marks अच्छा नहीं आया या फिर अच्छा result नहीं आया? So where the change need to happen? Sir, first is that I failed in my 12th standard at the first attempt. So, marks को कितना importance देना चाहिए तो वो तो I think it has answered the question when we are here sitting and talking about other success that I have had. They don't decide what a person's success would be in his life. But yes, education is really important to open up your vision, understand and learn things the way they have been learned since years to come by people who have created the system. और जब तक आप वो पढ़ोगे नहीं, जब तक आप वो समझोगे नहीं, तब तक आपका एक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा. बिकॉज कोई भी विजन और आइडिएशन के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए. वो अगर वो आपने पढ़ा है तो आपके आइडियाज़ उससे आगे जाएंगे. दैट्स वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज़ इवॉल्विंग नाउ इन टूडेज़ वर्ल्ड. एट द सेम टाइम आई मस्ट ऑल्सो से कि हम लोग शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कितना भी बोले कि the foreign education system is amazing, the way they are understanding, the way they are doing practical projects, ये वो सब कुछ कर रहे हैं. Let us also understand that Indian system is not only about ratta marrowing. Right. It is also some way making you a stronger person in the way with slight pressure that it creates. I'm not justifying the pressure that some students feel. Yeah. But why is it successful is basically जितने वर्ल्ड के टॉप CEOs है उसमें से 17 या 18 इंडियंस है आज आउट ऑफ द टॉप 30 CEOs of the world's biggest trillionaire companies. Now each of these 17 have actually come out of Indian education system and then they have gone to foreign countries and done their masters in different places and then become successful. तो कहीं ना कहीं वो justify तो करता है कि इनका education system and their platforms have been created well by the Indian education system. Yeah.
But having said that, in today's world, the kids now, as times have changed, we have to accept that. वो बन गए. But yes, we need to change. Now, like I said, we have to give them a very open learning system. That schools are adopting to it. वो change आ रहा है. Yes. The change in a way that we will also have to allow them to become masters of few things, and जहाँ उनका USP है, जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, those things only should be focused at, because there will come a time when we will only have kids to focus on 2 or 3 things that they are good at, and the rest, then the life can teach them. They don't need to bother about that, because they have to become specialist of those things. Yes. Like in medical, you know, initially there used to be a doctor कि यार आँख का ही डॉक्टर है. Now कोई सर रेटिना का अलग है, प्यूपिल का अलग है, कोई आँख की और का अलग है, सबके अलग अलग डॉक्टर्स हैं. They are super specialization. तो वो तो और भी चेंज होगा. Right. Now our kids will have to deal with super specialized robots or super specialized artificial intelligence coming their way. So unless and until they are focusing on that particular aspect where they are there, they will not be able to, you know, be there. So I think the education system in the secondary school will change a lot, and the world is changing. There are, in future, the foreign countries are also taking note of it, and they are developing that system, which I think India can also. There's no harm in accepting that something is good somewhere. And there are international boards also in so many schools which are doing that. That I think the Indian education system can imbibe and come out of it. So, you have been trying so many things, right? So many times for people, it might feel counterintuitive that many times, as you said, that you should focus on one thing. So, इस चीज़ पे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, एक्सपैंड योर इनकम, एक्सपैंड योर दिस थिंग, या फिर एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए. तो हाउ पीपल शुड अप्रोच दिस? क्या पहले वो एक पे करें फिर एक्सपेंड करें, या फिर एक साथ चीज़ें ट्राई करते हैं कई लोग, जो भी उनकी फेलियर का रीज़न कई बार बन जाता है. सो व्हाट यू हैव टू. मैं जो भी करता हूँ वो सर दैट विल कम टू ऑन द नेक्स्ट पार्ट. बट मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ which are focusing on various ways of life. मैं कई ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल है, पर एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो उनके बारे वो कुछ सोचते नहीं है. कोई मेरे जैसा है जो बिजनेस भी थोड़ा महीने में करता है, थोड़ा जो मेरा पैशन है लाइफ का, फिलैंथ्रॉफी एंड गिविंग बैक एंड चेंजिंग एंड इम्पैक्टिंग लाइफ, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, बिकॉज मेरा पैशन वो है. And there are people who are trying to do something else only and nothing. ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, हम हमारी ज़िंदगी में बहुत खुश है और हमको ये पैशन है हमारा और उसमें मज़ा करना है. They are enjoying their life. So to each his own way. First step is, sir, जब तक आपको अपना why नहीं मालूम है कि आप क्यों ये कर रहे हो, and if you don't know that why in your life, then you will not be able to do whatever you are doing and not be able to justify and never be able to be happy with whatever you are doing. और जब आप खुशी नहीं हो तो आप जो भी कर रहे हो शायद उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. आप कितने भी सक्सेसफुल हो, अगर आप खुशी नहीं हो तो वो सक्सेस का क्या रहा? दैट इज नॉट सक्सेस. दैट इज जस्ट अ प्रोसेस, दैट इज जस्ट एन एफर्ट दैट यू आर मेकिंग गोइंग एवरी डे टू योर वर्क, अनलेस यू वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग. और ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऐसे खाली जाते हैं, सुबह काम करते हैं, दे हैव ग्रेट प्रॉफिट्स ऑन द बैलेंस शीट, बट द हैप्पीनेस क्वोशंट, द सेटिस्फैक्शन क्वोशंट, I doubt. Fulfillment is not there. I see many times, many in my clients I see, yes, कि they are highly successful, big cars, big bungalows, big money, but that fulfillment is lacking because, yes, that alignment is not there, right? Because many times we just pick up our desires from our environment instead of aspiration coming from inside, it is coming from outside, and many times after achieving that, they realize that ये तो मुझे नहीं करना था, ये कहाँ पे आ गए. So I think why is important. Why is very, very important. How can anyone brainstorm or self-reflect to understand their why? Because many times कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में ही पता होता है, but for many people they have to go through so many things to understand their why. So what somebody can do to understand their why? What they can do? I think I'll share more about it rather than making you learn is that मेरी जिंदगी में it took me 7 to 10 years to understand what was my why. After changing several businesses, trying several things, when I became a certain level of success striked me, my first steps of success striked me, I thought, yes, these are my dreams, वो तो मैंने कर लिया है. At the age of 30, when you become actually a successful entrepreneur, you see that you've tried different businesses, you've been really successful at all of them, you're doing something which is expanding every day. When we were into the infra field today, you know, we were really expanding that time, we were taking our company into different states. I realized that, yaar,
पैसा is not something which is the most important thing for me in my life. I love living my life. I love all the luxuries that money brings to me, everything. But this is not something which is the ultimate goal of my life. अगर मेरे पैसे कमाने से या मेरी कंपनी से या मेरी ज़िंदगी के मकसद से किसी की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, या मेरे साथ जो रहने वाले हैं वो लोग भी ग्रो नहीं हो रहे, उनकी लाइफ मेरी लाइफ के साथ चेंज नहीं हो रही है, और मैं अकेला अगर पैसा कमा रहा हूँ और मेरे आजू बाजू के सराउंडिंग में सोसाइटी में कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद खाना नहीं खा पा रहे, जिनके चेहरे पे खुशी नहीं है, या मेरे एम्प्लॉयज़ वो लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे जहाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी ये सक्सेस का मायना नहीं है. And that's when I began charity at home. I designed various schemes for the people in my company, for their education, for their home groceries, for the medical expenses. Everything was started. All the schemes were rolled out. And each of my employees, today our retention is more than 99% until and unless they have some bigger change and they go out. We don't tell an employee to leave our organization at such a large scale also. So we have various ways, very different ways of HR. In our company, we still work as a family, even though we are 300, 400 people, big family, but we still work as a strong family and not a company. And when I realized that, now giving back and doing things rather than talking to my office and going to office, 4 घंटे काम की बात कर ली, पैसे कमाने की बात कर ली, पैसे कहाँ से आएंगे उसकी बात कर ली, उसके बाद जो 2-3 घंटे थे, I used to spend and work with my dad and other people in the HR on giving back to these employees to make their life better, creating more, ways in sustaining them. And when they come to office, they come with a sense of belonging to be as a part of this family. That's when the why of my life came out. कि यार मुझे तो लोगों को देने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, देने में ज़्यादा, और किसी को दे के जो मुझे खुशी मिलती है वो कुछ और ही है. उसके लिए मुझे खुद एम्पावर करना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे पास वो चीज़ हो जो मैं दे पाऊँ. सो आई हैड टू अर्न फॉर दैट बट गिविंग दैट, बट फ्रॉम वॉट एवर आई अर्नड, उसमें जो वापस देने का मज़ा था, जो सोसाइटी का जो मैं एक परसेंटेज समझता हूँ कि ये परसेंटेज इज बिलोंग्स टू द सोसाइटी विच गिव्स मी दिस मनी, उसमें जो अच्छा काम करने का मज़ा आता था, दैट्स व्हेन माई जर्नी टूवर्ड्स philanthropy started. And then after doing it for my company and the employees and my relatives, that's when I took out time for doing it for the society, and that's when the various initiatives that I do today have started. In philanthropy, you're doing so much work, so that's we commendable. Have old age homes, we have orphanages, we have food centers, we have street schools, we have Saksham Kanya Yojana, which has been a dream since 2 years, where we have more than 200 girls whose lifetime education we support, which is one of the biggest education support programs by any individual non-profit organization. So inspiring this is. So I think this is a great message for even budding entrepreneurs as well, that how to create a balance between profit and people, right? And with time, I think most of the authentic and genuine entrepreneurs, I think they realize at some moment that profit is not just my goal. I want to create impact. I want to inspire people. I want to make them evolve, and it gives tremendous fulfillment, not just happiness. Like happiness तो दो दोस्त साथ में बैठ करके अगर थोड़ा पार्टी भी कर लेंगे तो हैप्पीनेस तो आ जाती है. अगर किसी को उसमें हैप्पीनेस मिलती है कि बहुत काम करने के बाद मुझे वो 2 दोस्त मिलकर पार्टी करनी है, तो उसको वो करना चाहिए. आई एम नो जज, बट अगर आपको वो कुछ और करने में हैप्पीनेस मिलती है तो वो करिए, ये करने में मिलती है तो वो करिए, बट प्लीज़ वो करिए जिससे आपको खुशी मिले, बिकॉज आपकी हैप्पीनेस आपके परिवार की भी हैप्पीनेस के साथ इंटरलिंक्ड है. अगर एक पिलर परिवार में अगर हैप्पी नहीं होता है और वो चीज़ करवा रहे हो उनसे, तो पूरा परिवार सफ़र करता है, एंड देन द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो सफ़र. सो फर्स्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर वाई सॉर्टेड ऑफ लाइफ एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. Amazing.